So, Vanakkam. This is the three class. This is third class for CCTC and TMR commercial sections. So we are going to discuss the previous questions for this is the third class. Already we have discussed class 1 and class 2, the maximum questions we have discussed. Now we are going to discuss from 63 number questions today. सो अभी से देखो आप लोग जो भी क्लास 1 का देख लिया होगा उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आता है, किस तरह से प्रिपेयर करना है. मैंने बहुत सारा चीज़ उसमें एफर्ट किया है कि कैसे भी लाया जा सके, और मैं कुछ दिन में और भी ज़्यादा एफर्ट करके उसमें डालूँगा. बहुत सारा आइटम्स मैं कवर करने का कोशिश करूँगा. सो अभी क्या है, अभी वी आर वेरी न्यू इन टू द यूट्यूब एंड in these sections. So the flow we cannot achieve the as for the class how we are going to take the class this type we cannot give 100% here. Now we are improving. We will give 100% next class, or after 2 or 3 days we will free. I think if you are seeing a starting from a starting you will get this. I have some improvement given there. So now we are going to the 60 number 3 questions number 63, very important questions. This is the DFCCL. So now you see already DFCCL already we have discussed the DFCCL questions. This is the second questions for this questions paper. This is second number questions. So DFCCL is very important. So you can go to the DFCCL questions also. So it will be useful for you because DFCCL questions, this is the second questions they are asking. So now you see this is the DFCCL materials. Now we can see there. So you can see here DFCCL. Some we can some increase the plus yes. Now you can see the western corridor, freight corridor, western dedicated freight corridor, western. So see already we have discussed western corridor. Western means this western ghat corridor. This have from Mumbai, you see, from Mumbai to Mumbai, Gujarat, Rajasthan, and then UP, Haryana and UP. See, Mumbai here, Mumbai, Gujarat, this is Rajasthan, and this is Haryana and Delhi. So the western corridor, this is the western corridor, Mumbai to Dadar, UP, Mumbai to Dadar, UP. So first Mumbai to Dadri, UP. So Mumbai to UP varike western corridor. It is kilometer maybe updated. You can see also the YouTube you can see also Google. You can search the kilometer also. So you see the Gujarat, Rajasthan, Haryana and Uttar Pradesh. So this is 5 states is covering by the western corridor and eastern corridor. This is the eastern corridor. You can see eastern corridor from here. Eastern corridor Punjab, from Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal. So this is the western corridor. See like that western corridor. Here also some corridor is going on. It is under the work. This is going on. It will be work finished, maybe finished. Other 4 corridor you can see south, north, south dedicated freight corridor, east coast dedicated freight corridor, east west south corridor. These all are the corridor. It is like सर्वव्यूम चतुर्भुज योजना जो सड़क के लिए बनाया गया था. सर्व चतुर्भुज योजना सड़क के लिए उसी के आधार पर ये बनाया जा रहा है. सो ये भी एक तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको. सो दिस इज द now you can see the one more questions here comes from here. You can see here. So you can see here this is the questions they will ask. Nariya time kettanga many time they are asking these questions. So maximum permissible speed for Indian Railway
the maximum permissible speed is 100 kilometers per hour in empty, loaded 75, but dedicated freight corridor, maximum permissible speed dedicated freight corridor, empty 100, loaded 100. So this is also relaxed. So another thing, the questions is the difference between the station, so station A or station B. So what is the difference in the from here to here, इतना distance है, so नापद किलोमीटर, इतना 40 kmph, 40 kilometers. So 40 kilometers, one station to another station should be 40 kilometers. So C is the right answer. Next, what is the time for appeal in the High Court against the decision of claim tribunal? So RCT, Railway Claim Tribunal, RCT, this is 90 days. You can see here RCT. So RCT क्या है? So railway is not only limited to the run of railway, it is something beyond that. What is the functioning of railway also including issue like accident causing death, accident causing injured, refund for fare and freight, theft, loss and damage of goods, also all things देखता है. इसके लिए क्या करना है? इसके लिए उन्होंने एक RCTC का किया है, RCT लाया है. RCT was established under the Railway Claim Tribunal Act 1987 और RCT comes in force from 8 November 1989. So RCT Railway Claim Tribunal क्यों है, किस लिए है, क्यों दिया जाता है, सो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा व्यापार. सो RCT's प्रिंसिपल ब्रांच इज द न्यू दिल्ली. RCT का हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली इज द हेड क्वार्टर RCT. और नेक्स्ट RCT's करंट का है ये. आप ये चेंज भी हो सकता है, इसको आप देख लीजिएगा. चेयरमैन का कितना ब्रांचेज है, बेंचेज है, 23 बेंचेज है. RCT का बेंचेज 23 है. सो ये भी आप देख लीजिएगा, 23 बेंचेज है. और ये सब सारा डिटेल्स है RCT का. सो हम आपको इसका क्लास अलग लेंगे एक बार, तो उसमें हम आपको डिस्कस बता देंगे, पूरा डिटेल्स बताएंगे. सो नाउ यू कैन सी हियर वी हैव टू सी दिस थिंग्स. सो नाउ वी विल सी दिस. सो यू कैन सी हियर चेयरमैन. सो देखो चेयरमैन जो है वो हाई कोर्ट का जज होता है. एटलीस्ट 2 years ओल्ड ऑफ द वाइस चेयरमैन. वाइस चेयरमैन का दो वर्ष का काम करेगा. उसका जो है 5 years होगा रिटायरमेंट, और 65 years जो है वो होना चाहिए. उसके बाद देखिए इसमें, हाँ, टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड एज ऑफ 65 वर्ष तक वो रहेगा. उसमें एज ऑफ 65 years तक रहेगा. और ये इसमें और भी बहुत डिटेल्स है, मैं उतना में अभी नहीं जाऊंगा. आपको सिर्फ ये चीज़ दिखाना है कि ये चीज़ भी है. आपको इसमें एक दिन क्लास लेंगे इसका. सो देखिए इसमें हर चीज़ का है. सो इसमें देखिए, इसमें सारा डिटेल्स है जो मैं आपको बाद में अदर क्लास में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा. सो वी कैन सी है. नाउ वी कैन सी this is the decision given by the railway tribunal against the railway or party. They can appeal to the high court and necessary to the supreme court within 19 days. ये हम खोज रहे थे, अभी मिल गया. देखिए 19 days के अंदर में उसको क्या करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 days ऑलरेडी गिवन. ओके, चलो नेक्स्ट. हाउ मच डज द फ्राइट रेट इंक्रीज पर ईयर इन मैरी गो राउंड सिस्टम. तो देखो ये प्राइस जो है इसका जो कितना बढ़ता है पर ईयर, ऐसा पूछ रहा है. माल गो राउंड क्या होता है? मैरी गो राउंड क्या है? MORO बोलता है इसको. ये क्या है? मैरी गो राउंड क्या है?
मैरी गोल्ड राउंड में ये इतना कितना बढ़ाता है फ्लाइट कॉरिडोर में, कितना बढ़ता है, इसके लिए भी मैं एक सपोर्टिंग फाइल है, मैं देखता हूँ। ओके, सो इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर दीजिए। यू कैन गिव दिस आंसर इफ़ यू नो and how, then you can give answer in the comment box please. So now you see, in violation of which section Railway Act consignor can be applied to RRT? In which violation? In violation of section of Railway Act, the consignor can apply to RRT, Railway Rate Tribunal। इसका RRT का फुल फॉर्म होता है रेलवे रेट ट्रिब्यूनल। ये आपको इसमें किस सेक्शन के तहत ये जो है आंसर देना है। सो आंसर देना है, अभी देखिए 66 का आंसर क्या होगा। 66 में कह रहा है कि इन violation of which section of the Railway Act the consignor can apply to RRT। सो इसका आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर 30 डालते हैं। इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिला, अगर आप लोग के पास है तो आप भेजिए, कमेंट में डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRMS? सो सी, आपको ओल्ड बुक में IRMS का फुल फॉर्म मिलेगा। इन द ओल्ड बुक इफ़ यू फाउंड IRMS, it will come like that, Indian Railway Medical Service, but it is old. Indian Railway Medical Service, it is old. Now Indian Railways Management Service is the answer. Indian Railway Management Service is the answer. Okay, so next we will go to next questions. So what is the diversion fee per wagon collected? So diversion fee per wagon, डाइवर्सन, कोई गाड़ी को डाइवर्सन करना है तो उसके लिए क्या फ़ी लगेगा। सो डाइवर्सन फ़ी, सो प्रति वैगन 300 रुपीज़, विल टेक 300 रुपीज़ फॉर डाइवर्सन ऑफ ट्रेन वैगन। सो इफ रूट डाइवर्सन, सो दिस विल टेक 300 पर वैगन रेट्स। सो नाउ नेक्स्ट, इन विच सेक्शन इंडियन रेलवे एक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव can right to make a new rules? So under which section Indian Railway can make a new rules? So this section you can see all the sections are asking questions. So sections la maximum questions they are asking. So we will give the separate video for sections. So if you know the answer, you can comment this. So the answer is 98. Answer is 98. But even those, if you are any inquiry, please give the answer. Okay, 70. All proposals for the MGR system should be approved by merry-go-round. So MGR system should be approved by. So merry-go-round, so all approved, yaar approved panwanga. Who will give approval? So you can see the supporting values. So now you see questions number 69. 189 is the right answer. Sorry, 189 is the right answer. 189 section la enna sollirukanga, what are the central government ka or authority கொடுத்திருக்காங்க, அந்த செக்ஷன் குள்ள அவர் போயிட்டு ஒரு ரூல் ரெடி பண்ணலாம். 70 number questions. So all proposals for MGR system should be approved by railway board. So see, now if they ask in zonal level, upper GM, if division level, if DR, if the railway board level, if you are asking MGR for all proposal, and that times zonal level is the answer. If zonal the railway board is the answer. If zonal level, they are asking what all the proposal for the MGR system should be approved by dash in zonal level GM, in division level DR. So this is the answer, is the railway board level all proposal of
MGR is the answer. So now you see, so Concord was established. This is the basic questions. Anybody know that questions? Please comment box. So MGR. So Concord, which time came? So Concord is established on 1988 under the Company Act and being it's operational in November 1989. So Concord established हुआ था ये 1988 में and being a functional और काम करना शुरू हुआ था இது ஃபங்க்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1989ல ஸோ இப்போ என்ன கட்டுருக்காங்களா Container Corporation of India. Concor, what is the full form of Concor? Container Corporation of India. So Container Corporation of India was established in March 1988 and it is functional from 1989. It is functional from 1989. What is the purpose? To support India's international and domestic containerized cargo movement. So this is the answer. It is a D answer. 1988 is the right answer. Now another questions we can see. This is the questions, very important questions. Nariya time ketirukanga 72 number question. What is the maximum percentage charge collected in case of livestock? So livestock, in case of livestock, what is the maximum charge collected? So maximum charge collected in livestock. So this is 1%. This is 1%. Now you can see supporting file. So you can see in case of livestock in Indian Railway is 1% of the excess value. So 1% is the livestock, 1% vaanga. Okay. Next we will go to the next questions. Next question 73. What is the maximum limit of refund of the principal deposit? So what is the maximum limit for refund of principal deposit? Maximum. So maximum, what is the answer is? So answer is 6 months. What is the answer? 6 months the answer. So 73 answer is 6 months. Now we can see what is the schedule of power of PCCM for waiver of demurrage wafrage charge. Waiver of demurrage and wafrage charge. So इसमें क्या होता है कि PCCM को विलम्ब सूच घाटा सूच माने छूट में PCS क्या सकती है. So PCCM have demurrage charge and wafrage charge some schedule power. So what is the schedule powers? We are going to see some files in there. So now you can see here this is the letters given by Railway Board 16/7/21. Now we are going to see what is the maximum power waiver. So the extent so extend schedule power for regarding waiver of demurrage wafrage charge. Demurrage and wafrage charge ये भाई क्या आ गया हाँ demurrage और wafrage charge during incorporative of the board letter circular. So see, so this is the full powers, maximum amount wafrage charge, demurrage charge of wagon per wagon. So now you see AGM have full power. AGM have full power. AGM full power irke. Now what? Now CCM coordinating HOD commercial department 1 lakh full power 1 lakh रन में wafrage charge demurrage charge 1 lakh का उसको. So the questions first question पढ़ेंगे आधा का प्रिपेयर करना. Questions में क्या बोल रहा है कि what is the schedule power for PCCM waiver demurrage charge. So waiver demurrage charge. So demurrage charge और wafrage charge ला PCCM के ना पावर इनके रिवेट 15 देखा आगे. सो CCM को क्या पावर है छूट के लिए. सो वही हम देख रहे हैं छूट के लिए क्या पावर है
कि CCM को AGM हैव फुल पावर, CCM हैज 1 लाख 1 लाख, HOD हैव 50,000, DRM have 25,000, and CTM has 10,000, and DCM has 600, ACM has 300. So this is the schedule power. Now you see PCCM 1 lakh, PCCM, this is the PCCM, Principal Chief Operating Manager, this Principal Chief Commercial Manager. This is the second number, the Commercial Manager 1 lakh 1 lakh. बोथ केस डुबरेज चार्ज ऑफरेज चार्ज बोथ केस 1 लाख रुपया वो क्या कर सकता है, वेवर कर सकता है. सो आंसर इज 1 लाख. नाउ कम टू द आंसर पॉइंट. आंसर इज 1 लाख. आंसर इज 1 लाख. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ यू कैन सी हाउ इज द डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप इज डन. सो स्क्रैप क्या होता है, जैसे आप कोई काम किया जो कचरा बच गया उसी को स्क्रैप बोलते हैं, वही होता है स्क्रैप. तो स्क्रैप, या फिर कोई सामान टूट गया, कोई सामान ख़राब हो गया, कोई सामान नॉट यूज़ है, तो वो सब चीज़ स्क्रैप होता है. तो स्क्रैप में रेलवे कैसे इसको बेचता है, स्क्रैप को कैसे रेलवे जो है हटाता है सर्विस से. जैसे मान लीजिए हमारे घर में कचरा है तो कचरा वाली को दे देते हैं, अगर कोई कॉस्टली कचरा है तो मार्केट में जाकर बेच देते हैं. रेलवे ऐसे ही करता है. और रहना परमांगा फर्स्ट ऑक्शन, क्योंकि रेलवे का कचरा भी तो करोड़ों का होता है. सो फर्स्ट ऑक्शन करेगा, उसके बाद सेल थ्रू डीलर, टेंडर को दे देगा. सेल थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे देगा. ऑल ऑफ दिस द राइट आंसर. सो दिस इज द स्क्रैप. I hope you understand the scrap also. So which is the following is not required for cancellation of a reserve ticket. So रिजर्व टिकट के लिए कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है, क्या रिक्वायर्ड नहीं है. PNR नंबर इज रिक्वायर्ड, टिकट नंबर इज रिक्वायर्ड, विंडो नंबर नॉट रिक्वायर्ड, रैंडम नंबर. सो टिकट नंबर, FNR नंबर, ये सब रिक्वायर्ड है. ओके, PNR नंबर, टिकट नंबर एंड रैंडम नंबर, दिस ऑल आर रिक्वायर्ड, बट ओनली विंडो नंबर आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंसिलेशन ऑफ टिकट. नेक्स्ट इज who is the responsible of the account department on divisional level. 77 questions. So DFM is the responsible. So DFM is the answer. Correct. What is the highest scale of parcel traffic? So parcel traffic में सबसे हाईएस्ट स्केल क्या है. हाईएस्ट स्केल का मतलब होता है, स्केल देखिए कितना है, स्केल L है, R है, PS. सो बहुत सारा स्केल है, इसमें कौन सा ज़्यादा सबसे हाईएस्ट मार्क पैसा लेता है, किस स्केल में सबसे ज़्यादा पैसा लेता है. देखिए, अगर आप कोई लगेज बुक करेंगे, स्केल किस स्केल में कितना पैसा आएगा, अभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं. देख लीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. हाँ, तो ये कहाँ गया, चलो नाउ यू सी. सो स्केल R, द टॉप डिफरेंस स्केल. सो स्केल R जो है सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है. स्केल R इज द फॉर मोस्ट प्रीमियम फास्ट सर्विस ऑफ राजधानी एक्सप्रेस. सो स्केल R इज द जास्ते मैंने क्या कहता है, स्केल R जो है हाईएस्ट स्केल है, तो स्केल R ये दे देंगे आंसर. ओके, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल फेयर इन द फर्स्ट क्लास. सो फर्स्ट क्लास में मिनिमम चार्जेबल क्या है, फेयर ऑर्डिनरी. सो मिनिमम चार्जेस इन फर्स्ट क्लास. व्हाट इज द मिनिमम चार्ज ऑफ फेयर इन फर्स्ट क्लास. सो फर्स्ट क्लास का मिनिमम फेयर चार्ज क्या है, आप इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देख. सो दिस इज 45 rupees, correct answer. So this is the minimum chargeable first class lo 45. So this is 45 is the correct answer. Now we will go to the questions number 80. Questions number 80 कितने कुछ 80 ला. हाँ, what is the minimum amount for compensation in train accident. सो कंपेंसेशन आप लोग जानते होंगे 8 लाख रुपीज़. सो ऑलरेडी वन वीडियो वी हैव डिस्कस एक्स ग्रेसिया अमाउंट. यू गो टू दिस वीडियो, you will get all the things.
So we have described clearly in this video, ex gratia amount video. You will see the all the aspect, all the questions you can cover these questions. This video. How many types of marking are there in railway, Indian Railway? So two marking, one private marking and one government partner marking. So two marking. So cash withdrawal from the section station earning is done by the CMI approved by the. So this is the PCCM. Is the answer. One minute. This is the wrong answer. So this is the senior DCM is the right answer. Sorry, this is the senior DCM is the right answer. Senior DCM is the right answer. Okay. Now we will go to the railway, the enter into the railway premises with what necessary. So रेलवे premises में आने के लिए क्या necessary है? देखो इसमें दो चीज़ है, एक रेलवे premises है और एक है रेलवे प्लेटफॉर्म. सो रेलवे प्लेटफॉर्म में आने के लिए हमको प्लेटफॉर्म टिकट चाहिए, लेकिन रेलवे प्रेमिसेस में जाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि रेलवे प्रेमिसेस तो बहुत है, कहीं भी कुछ से जा सकते हैं. लेकिन प्लेटफॉर्म का अंदर अगर ऐसा बोले, इफ़ दे आस्किंग द रेलवे प्लेटफॉर्म, सो डू यू हैव रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट, बट ही इज टेलिंग रेलवे प्रेमिसेस. सो रेलवे प्रेमिसेस इज द लॉन्ग एरिया, सो इट मे बी आंसर इज नॉन ऑफ दिस. What is the color of the excess fare ticket? Excess fare ticket means when you are travel in the train without ticket or proper ticket, or in proper suppose is sleeper coach ka ticket vangi AC la poirichi, on the time they will ask excess fare ticket. Excess fare ticket means white color. Excess fare ticket white color. So pass color I have already discussed in that video. So you can see the pass color, first AC, second class AC, all already I have discussed the pass color in past video. You can go to this video and see the what are the colors available in pass, what are the colors available in BPC certificate, brake power van certificate, all the things we have discussed in this video. So now what is the minimum fine provision section 142. So 142 minimum fine 1000 rupees. So what is the 142? 142 is the, so is 500, sorry, this 500 answer, this is the 500 answer. The 142 what is telling? 142 is telling if the person under 142 of the Indian Railway Act, the fine for illegally transferring, selling or buying a reserved ticket. So illegally अगर ticket हम sell करते हैं, खरीदते हैं, on that time we have to fine. If पकड़ाए जाते हैं कि आप illegal ticket को selling और buy कर रहे हैं, तो उस समय section 142 imposed होगा. On that section we have to pay 500 rupees or 3 months imprisonment, jail हो सकता है, 3 months jail भी हो सकता है. So this is the answer. So what is the luggage allowance for passenger train in the first class? 70 kg. The 86 answer is correct. It is 70 kg is answer. Next, under which section the forwarding note is on unstamped executive document? So forwarding note already we have discussed in the theory class. Forwarding note is section 64. Already we have discussed forwarding note. What is the forwarding note? How many times? What is the validity of forwarding note? Which time forwarding note is issued? When all things we have discussed in that video. You can go and see that video on that forwarding note video. Already separate video is there. So what extra charge will recovered on parcel booking for booking a railway rigs? So see, railway rigs and own rigs. So both two rigs is there. So railway rigs and own rigs. So this I have also given the same. This is the these questions we have also discussed in the this railway rigs and personal rigs.
So railway rail rigs and honor rigs. So two rigs is there, railway rigs and honor rigs. So already I have Victor. Now see the 50% answer is right. But you if you want to go the inside the these chapters, you can go to the theory chapters. Already we have discussed. So 89, an application for booking a special train should be IRCTC. IRCTC, how many days before we have to book the IRCTC? So see, FTR is generate at least 30 days before, at least 30 days before, but not should be the 6 month above. So 6 month is the right answer. So in advance, 6 month advance we can book the FTR and FTR book panla 6 month before running a 6 book panla, but 30 days 30 days ka ulle book panna mudiyadu, 30 days up to the 30 days, at least 30 days before we have to at least 30 day advance we have to book the FTR. So full tariff rate, FTR full form na full tariff rate, FTR full form full tariff rate. So advance booking window minimum 30 days to maximum 6 months. Application process through IRCT, FTR. Final payment, full fare is done before 7 days from the journey. So full payment you have to pay before the starting the journey. If you are booking the special train, so sometime the public were booking the special train, on that time we have to book in advance of 6 months or 30 days before. So 30 days in advance we have to book the FTR book panna kapra, we have to you have to pay within 7 days before 7 days. if you are going to travel 7 days का पहले ही बुक कर देना है, पैसा दे देना है, सभी पैसा उसको 7 days को पहले ही पे कर देना है रेलवे को. सो नाउ हाउ लॉन्ग कैन द ट्रैवल पीरियड इज एक्सटेंडेड अंडर विकल्प स्कीम. सो देखो विकल्प स्कीम जो है ये 12 आवर्स, कितना आवर्स है 12 आवर्स है. हाउ मच एक्स्ट्रा प्राइट इज टेकन फॉर स्केल एल ऑन बुकिंग ऑफ एनिमल बर्ड्स ब्रेक बैन. सो आप देखिए पहले ये इसका विकल्प क्या है. विकल्प जब मान लीजिए आपने कोई टिकट लिया और वेटिंग लिस्ट में है, अगर वो टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो विकल्प का ऑप्शन आता है. तो उस समय आप 4-5 ट्रेन कम से कम आप जितना भी हो सके आपके हिसाब से आप उसमें विकल्प के लिए रख सकते हैं. सो ये चीज़ है. हाउ मैनी सो 12 आवर्स के पहले आप ये आपको जानकारी देना है. सो हाउ मच एक्स्ट्रा फ्राइट टेक ऑफ स्केल एल. एक्स्ट्रा फ्राइट क्या लेगा जब वो एनिमल और बर्ड्स को ब्रेक वैन में बुक करेगा. सो एनिमल और बर्ड्स को ब्रेक वैन में बुक करना है तो क्या लेगा एक्स्ट्रा फ्राइट 25%. इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. 25% हमेशा लेता है एक्स्ट्रा फ्राइट. सो हाउ मच कंसेशन इज गिवन टू हॉट पेशेंट स्लीपर क्लास एक्सेस फेयर. सो स्लीपर क्लास में पैसेंजर सो देखो ये जो है आपको 75% देगा. 75% ब्लाइंड को होगा या हार्ट पेशेंट को होगा, हार्ट ऑपरेशन होगा, ये कुछ भी ऐसा डिजीज है, जैसे कुछ डिजीज है जैसे कैंसर हुआ इसमें 100% देता है. तो ऐसा आपको एक चार्ट है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, लिंक में मैं डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा वो चार्ट, उसमें सारा चीज़ दिया हुआ है. सो हाउ मच बोनस इज गिवन टू परसेंटेज ऑफ ATVM. ATVM का जो पर्सन है उसको कितना बोनस मिलता है वो काम करने के बाद. सो ये 3% है. आंसर इज 3%. आंसर इज 3%. सो 3% इज द आंसर. 3% is the bonus charge given by the government to the ATVM. So 3% charge ticket given to the ATVM. ATVM का full form क्या होता है? You comment the box. Comment in the comment box. So when may be the download chart on HTT by TT. अच्छा HTT वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अभी नया आया है HTT, आप देख लीजिए. अभी जो है ये केवल बड़ा शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस में HTT चल रहा है TT के लिए. सो HTT क्या है? यू कैन सी द HTT. व्हाट इज द HTT? HTT इज
You can see the here HTT. 1 minute. So see, this is the HTT, handheld terminals for TT in a train. So now they are extending to some more trains. So HTT, it is already known as known to us that railway has introduced handheld terminals HTT on the trial basis in some trains, Rajdhani, Shatabdi, Gujarat Quant and Sampark Kranti. Now they are extending some more. So what is the use of this HTT? HTT में जब ट्रेन निकल जाएगा चार्ट 2 बार प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद जो है अगर किसी को भी अगर मान लीजिए RAC रह जाएगा तो TT के पास ऑटोमेटिकली सारा चीज़ सिस्टम आ जाएगा और वो उससे वो चार्ट प्रिपेयर करके सबको फिर से दे सकता है। TT खुद से चार्ट प्रिपेयर कर सकता है इस HTT मशीन में, HTT मशीन में वो खुद से चार्ट प्रिपेयर करके वो दे सकता है। तो ये दिया है HTT का, ठीक है। HTT आप समझ गए होंगे, TT के पास रहता है। तो ये आफ्टर डिपार्चर ऑफ ट्रेन और आफ्टर वैन टू चार्ट प्रिपेयर्ड, आफ्टर वैन टू चार्ट प्रिपेयर्ड, ये होता है आंसर, आफ्टर वैन टू चार्ट प्रिपेयर्ड। सो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KRCL? सो ये तो आप जानते होंगे, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो अंडर विच सेक्शन टेकन अगेंस्ट द सेलिंग स्टॉफ स्टेशन एंड ट्रेन? सो ये बिगर को जो होता है उसको लिए है, आप लोग इसमें देख के हमको कमेंट में डालिए, इसका आंसर सेक्शन का है, ये रटने वाला है, इसको आप आंसर में डालिए कमेंट्स बॉक्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द राजधानी सिचुएटेड, वेयर इज़ द रेलवे बोर्ड सिचुएटेड, सॉरी रेलवे बोर्ड सिचुएटेड, ये तो आपको पता है न्यू दिल्ली में है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैगन स्टैंडर्ड रेक BCNHL? सो इसके लिए एक अलग से वीडियो में देखिए, जो मैं थ्योरी वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा नहीं, थ्योरी वीडियो बहुत कम व्यू आया है थ्योरी वीडियो में, लेकिन मैं अभी ये देख रहा हूँ कि थ्योरी वीडियो से कम 50 क्वेश्चन हमने अभी तक देख चुका है, केवल मेरे थ्योरी वीडियो से आया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यू गो टू द थ्योरी वीडियो एंड यू कैन सी। सो आई हैव सीन दैट 50 क्वेश्चंस हैज़ कम फ्रॉम द theory, direct theory class. So I requested to you all to please go to see the theory videos, then you have to you are able to do solve these questions easily. So BCNHL is 58 wagons, okay, which of the following articles is not accepted as a language? So articles कौन सा जो है लगेज के लिए, सॉरी लैंग्वेज नहीं लगेज, सो लगेज के लिए कौन सा आर्टिकल जो है सॉरी आर्टिकल्स हाँ एक्सेप्टेड नहीं होगा। सो देखो लगेज में जो है आपको ट्रेडिशनल आएगा, हाउस होल्ड आएगा, एक्सक्लूसिव नहीं आएगा। ये जो विस्फोटक है ना, ये लगेज में आप बुक नहीं कर सकते, ये लगेज में आप बुक करेंगे तो फिर आपको बस समझिए कल्याण होगा, ये आप बुक नहीं कर सकते। इसका आंसर होता है एक्सप्लोसिव, आंसर सी आंसर हो जाएगा। सो 100 क्वेश्चंस में हाउ मेनी डिजीज आर देयर इन अ स्टॉक नंबर गुड्स ट्रेन रिसिप्ट, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था 11 नंबर FR सो गुड्स ट्रेन का FNR ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि PNR में 10 नंबर होता है, FNR में 11 नंबर होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। PNR ना पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, FNR पैसेंजर रिकॉर्ड number record, already we have discussed in that questions we have. So how much maximum time permissible can be give party luggage stacking of goods by the divisional railway manager? So stacking of goods, देखिए stacking of goods, इसका लिए मैं एक लिखा था stacking of goods, एक मिनट stacking इसमें है क्या, हाँ सो सी स्टैकिंग ऑफ गुड्स। सो एडवांस स्टैकिंग ऑफ गुड्स, इसमें आप देख लीजिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद याद आ जाएगा। हाउएवर इन एक्सेप्शनल इन केस वेयर एडिशनल ट्रैफिक एंड एडिशनल अर्निंग विल एक्योर, permissible may be granted for advance stacking for more than 5 days in case of basic. So देखिए more than 5 days permission for advanced stacking period
up to 10 days must be granted to approval of DRM. So DRM जो है, DCM जो है मतलब 5 दिन तक दे सकता है. DCM कितना दिन तक दे सकता है? 5 दिन तक. और 5 से 10 दिन तक कौन देगा? DRM. Up to 5 days DCM can permit with the consultation of DOM. DCM can permit DOM can permit with the consultation of DCM up to 5 days. But 5 to 10 days the DRM will permit. 5 to 10 days DRM will permit with the recommendation of senior DOM, DCM. Okay, beyond 10 days GM will permit up to recommendation of the CCM or COM. Understand? So first you see up to 5 days recommendation DCM, DOM will permit. 5 to 10 days DRM will permit recommendation DCM, senior DOM. Beyond 10 days GM will permit recommendation CCM or PCOM. So this is the answer. Okay, so I think you will able to give answer. Now see DRM 10 days. Very good. So next questions. What is the next questions? What is the cancellation charge for a luggage ticket is surrender for a cancellation before dispatch of luggage in the starting station? So cancellation charge क्या होगा अगर लगेज कैंसिल कर दिया स्टार्टिंग स्टेशन पे? तो सो इसका आंसर हो जाएगा कितना होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए. ओके, वो बैटरी वेरी लो. ओके, नेक्स्ट है मैं जल्दी जा रहा हूँ, इसका आंसर आप बताइए कमेंट में. सो 103 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ. हु इशू रेल ट्रेवल कूपन्स टू MLA. MLA के लिए रेल ट्रैवल टिकट कूपन कौन इशू करता है? इसको देख लीजिए. मेरा नेटवर्क ख़त्म हो गया, बैटरी ख़त्म हो गया, इसलिए मैं फास्ट भाग रहा हूँ. एनी रेलवे सर्वेंट हु स्टेट इंटॉक्सिकेशन माने शराब पी के आ जाता है, ये कुछ भी हो, इसके लिए 173 है. 173 में कह रहा है कि शराब मत पी का हो. हाउ मैनी ब्रेक जर्नी 5 देखो 500 किलोमीटर तक अगर आप बुक करते हो टिकट तो एक ब्रेक जर्नी मिलेगा, एक ब्रेक जर्नी. 5 से आगे जब आप जैसे जाओगे तो 2, 3 ऐसे करके आपको मैक्सिमम ले सकते हैं ब्रेक जर्नी. ठीक है. सो नेक्स्ट है 6 में हाउ विच पैकिंग कंडीशन विल बी एप्लीकेबल फॉर लोडिंग ऑफ कोल. सो इसका आंसर आप लोग बताइए. मैं विल डिस्कस करूँगा अगला वीडियो में, ट्राई करूँगा. रेलवे शक्ति प्रोडक्ट रिलेटेड टू रेल शक्ति प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू विच फॉलोइंग? रेलवे लोको रेल शक्ति प्रोडक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए. रेल शक्ति प्रोडक्ट रेलवे लोको से संबंधित है. रेल शक्ति प्रोडक्ट संबंधित विद रेलवे लोको. ठीक है. 97, 98 क्वेश्चन देख लीजिए. 90 फुल फॉर्म ऑफ ITES माने ये तो सही है, इंटीग्रेटेड ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम. और व्हाट इज द फ्री टाइम्स गिवन फॉर केस ऑफ वाफरे चार्ज अदर दैन द नोटिफाइड स्टेशन. सो ये आपको मैं इसमें सपोर्टिव है वाफरे चार्ज का, लेकिन मेरे पास टाइम यदि बैटरी ख़त्म हो गया. ये वाफरे चार्ज का है, सपोर्टिव चार्ज है, लेकिन अभी मैं इसका आंसर छोड़ रहा हूँ. आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए. और देखिए ये अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ गॉड, ये रेलवे में अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ गॉड डैमेज आप क्लेम नहीं कर सकते. एक्ट ऑफ गॉड में अगर कोई चीज़ आपका क्षति हो गया, कोई लगेज आपका डैमेज हो गया, तो उसमें 93 सेक्शन 93 के तहत आप क्लेम नहीं कर सकते. सो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन द रेलवे इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड. सो डैमेज ऑफ एक्ट ऑफ गॉड के तहत रेलवे रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सेक्शन 93. आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा. और आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और enjoy it. So further we motivated to do another video also. Please do, if you have time, please go through the video and try to see the video. Okay, thank you.